of equations, and if this equation is defined by dy by dx that equals to axy. So if we define this dy over dx that equals to ay, and suppose this is equation number 1, and here what is a? So a is basically 2 cross 2 matrix. Okay, so here a is 2 cross 2 matrix, and what is your y? Basically y with a vector which is 2-dimensional. Okay, so this component is basically y1 and y2. So here we take this tuple, and that tuple is if we take y1 and y2, that tuple, and this for any x which belongs to real R. So this represents a curve that is your solution curve, and this curve is, if you denote that curve is by a c, so this curve is denoted by c. So this curve in basically in R2 plane. So this is in R2, and this is in parametric form. Okay, so the curve, that curve is C, and this curve is called the plane, the phase plane analysis. Yeah, we can say that this is basically phase portrait. Okay, so and this procedure is known as plane phase yeah, analysis. Okay, so this is for equation 1. Okay, so now it is easier to draw the curve when this matrix A, that matrix A is in canonical form, and if this matrix is not in canonical form, so then that case your phase portrait looks like the same, but some distortion is there. Okay, so it is a simple remark. You can write this. Okay, so it is easier to draw the curve when your matrix A is in its canonical form. However, in its original form, this means when A is not canonical, you can write here that is when A is not in canonical form, so this phase portrait is similar to basically your curve C. Okay, so these portrait have similar, but some distortion is there. So you can write, but distorted diagram. Okay, so this is your basically a definition of what is the phase portrait, and here we did only the phase portrait diagram in R2 plane because here
here we can plot in this whiteboard, and that whiteboard is your basically R2 plane. But the generalization of this system of linear equation in 2 or 3 or 4 or more dimension, and you can plot this phase portrait by using a MATLAB program. And that MATLAB, the full form of MATLAB is basically matrix laboratory, and in short, you know that program is a MATLAB. And in also this phase portrait diagram, you can also use there are certain software, you can draw this in MATLAB or Mathematica, okay, or you can use in basically XPP out. Okay, so and there are in for more than 2 dimensional, you can use this or you can use Python. Okay, and other are basically there. Okay, but here these two are you have to purchase this MATLAB or Mathematica, or you can use this crack version of that software, because this is not free. And these two are open source, you can download from net, and you can using that two software. This is free. Okay, so you can use that software and make this solution of the system of matrix equation, and you can draw your phase portrait analysis, and you can also find the points, which one is the starting point, that is your which is source, and what is the stable point, and so on. Okay, so all analysis you will do in this by using this software. But this part of this phase portrait analysis, which is also known as dynamical system, or you can use phase plane analysis of your differential system of equation. So this portion is used in various discipline in research. Okay, so ये जो portion है, ये basically इसका जो generalized one है, और even in R2 plane ये भी आप रिसर्च लेवल पे आप यूज करते हो. ओके, तो वो सारी चीजें हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, तो उस सेंस में है ये सारी चीजें. तो यहाँ से प्रिविलेज है कि व्हाट सिर्फ ओनली हम सिर्फ इसकी बेसिक आइडिया क्या है सिर्फ वो बता रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ये पूरा फुल एक कोर्स है आपका डायनामिकल सिस्टम एनालिसिस, और यहाँ पे हम सिर्फ उसको थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन उसके दे रहे हैं. ओके, तो बहुत डिटेल में इसमें मैं नहीं जाना, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हमें करना. ओके, सो इफ वी assume a matrix which is not in canonical form, so if we have a matrix, say 2 cross 2, and suppose this is a matrix, and the canonical form, suppose canonical form of this matrix is suppose B. Okay, and this is if the canonical form of this is minus, suppose this matrix is the canonical form of that. Okay, so here you check that this is canonical or not. I think here +2 or something -2. I confuse here. Okay, but anyway, suppose A be the matrix, and here the canonical form of that matrix A is B. And here, if this is the canonical form, so you know that if A is written in the form of in this form, okay, so this is your canonical form. Okay, so here this is the diagonal matrix, and here A be the non-diagonal. So यहाँ पे A आपकी canonical form में नहीं है, but B is in canonical form. Okay, so if we suppose if we define any variable Z, which is this matrix P of Y. Okay, so then your equation 1, the equation 1 means this equation, what is the value of dy by dx? So हम ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि what is, if z is this thing, so what is the value of dz by dx? So this equals to p dy over dx. Okay, so here you can see this, this is p, and what is dy by dx? Dy by dx is ay. So p dy over dx, that equals to p, and what is dy by dx? That is a of y. And here this equals to p and this thing. Okay, so now
if we use what is the value of your y, so here what is your value of y, so from that, so if we pre-multiplication of p inverse, this p inverse z, this equals to y. Okay, so now if we put in here, so this equals to here p a, and what is y? So y is p inverse z. Okay, so now what is the value of a is, if a is written in the canonical form, so a is equals to p inverse bp. So now this equals to p, and what is the value of a? A is b inverse bp p inverse z. Okay, so this equals to this p inverse, if we put this together, and p and b p inverse, and this is z. So this becomes identity matrix, and this becomes identity matrix. If you multiply here, this is simply bz, and here what is this thing, p of dy by dx, this equals to dz over dx. So this is simply z prime. So z prime equals to this thing. Okay, say this is equation number 2. Okay, so this equation number 2 comes from this equation number 1, but here this z prime, here bz means here b with the matrix in the canonical form, and here equation 1 is y prime equals to ay, where a b in non-canonical form. So if we have to plot this portrait of this system of linear differential equation, where a be the non-canonical form, we can reduce this into the canonical form by substituting this variable, and here this is z prime equals to this thing. So we can easily plot this thing, and if we plotting these two, and try to see what is the differences between these two and what is the similarities between these two. So basically the nature is same, but in this non-canonical form the distortion is there. Okay, so when we plot this linear system of equation, so here in next page this equation 2 is sometimes is referred to equation first. In equation 2, your matrix is canonical form. In equation 1, this is non-canonical form. So when A is in its canonical form, okay, so the phase portrait of suppose if we have if we draw to this bz, where b with the canonical form, and here your system is y prime equals to ay, and here a is -1 0 1 -2. Okay, so this is your matrix A here, and what is here b is in canonical form. This is -1 0 0 -2. Okay, so this is in this case here and here. Okay, so in a previous page you define these two system of equations. Okay, so here in this form, when this is in canonical form, so here what is your variable? That is your z, and this is in 2-dimensional, so this is a z1 and this is z2, and this becomes a 0. Okay, so here if this canonical form, then b is minus, this is your lambda 1, and this is suppose
lambda and mu are the eigenvalues of that. Okay, so when the solution of this is curve is looks like z1, okay, and here this is z2 towards the origin, okay, towards the origin, and here this is supposed for corresponding lambda 1. So any point which is on z2, this goes to origin, and here z1 or this side, this goes to origin. And for any point which is on this plane, this side, so this is goes to like this, okay, in inward direction, and here in this manner. Okay, so if we draw this system of equation by using MATLAB, so you see that this type of graph is appear, okay, which is all are going towards the origin, because this all two eigenvalues are 0, this is less than 0. okay, तो ये कैसे ये चीजें होती हैं, इसके सारे डिफरेंट केसेस अभी हम एक्सप्लोर करेंगे. बस यहाँ पे सिंपल हम दिखाना चाह रहे हैं कि इफ योर दिस मैट्रिक्स इन कैनोनिकल फॉर्म, तो फेज प्लेन डायग्राम ऑफ इसका इस तरह से दिखेगा. और यदि आपकी नॉन कैनोनिकल फॉर्म में है, तो उस केस में जो हमारे ग्राफ होंगे, और यहाँ पे हमारे वेरिएबल क्या है, y1 एंड y2. तो जो प्लेन इज y1 y2, दिस इज origin, and here this is a line. That line is y equals to x. This is y1 equals to y2. Okay, so here your graph of this matrix looks like this thing. Okay, so the graph of this non-canonical matrix is looks like this thing, and here this is look like this thing. Okay, तो ये कैसे है? हेलो, हाँ हेलो, कैसे ड्रॉ किया गया सर, ये बता दीजिए. सर ऐसे एक पैराबोला में से एक स्ट्रेट लाइन में से कैसे ड्रॉ किया गया इसको? ओके, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे. अभी हम बताएंगे कि आइगन वैल्यूज बेसिकली डिपेंड्स ऑन इसकी जो नेचर है ना, ये सारे इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सब डिपेंड करेंगे इनकी आइगन वैल्यूज पे, कि आइगन वैल्यूज इनकी दोनों की दोनों लेस देन 0 है, दोनों की दोनों ग्रेटर देन 0 है. लेस देन 0 है तो एक दोनों इक्वल है या अनइक्वल है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे, सारे केसेस. ओके, इसमें बेसिकली ये है कि यहाँ पे रफली अगर हम देखें तो इसके जो सोल्यूशन होंगे दैट इज e की पावर माइनस सपोज लैम्डा 1 और या z1. ओके, और यहाँ पे क्या होगा, e की पावर माइनस 2 z2. ओके, तो व्हेन z, ये जो आपका z नहीं किसका फंक्शन है, dz ओवर dx है, तो हम यहाँ इन शॉर्ट हमसे बता देते हैं, एक आपका होगा माइनस ऑफ x और दूसरा होगा e की पावर माइनस ऑफ 2x. इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे ना ये दोनों, ड्यू टू आइगन वैल्यूज आर -1 एंड -2. ओके, तो व्हेन x इज लार्ज, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हेन x, this is solution for z1 something constant and this is equals to z2 for something constant. Okay, so when x is very large, x tends to infinity, then z1 tends to 0. So when x tends to infinity, this solution goes towards your 0 solution. Similarly, when this x is very large, then this z2 goes to your 0 solution. So this represent when your x tends to infinity, then this is going towards this direction. And x, if you're in positive up, suppose this is tends to minus infinity, then this is in outward direction. Okay, तो ये जो फेज प्लेन एनालिसिस है ये बताएगा कि फॉर लार्ज एक्स पे आपके जो सोल्यूशन है z1 एंड z2, ये किस ओर ये जा रहे हैं. तो यहाँ z1 भी आपका टुवर्ड्स 0 जा रहा है, z2 भी टुवर्ड्स 0 जा रहा है, और ये जो पॉइंट कोई पॉइंट होगा वो पॉइंट आपका किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर. कहीं पे भी पॉइंट होगा वो टुवर्ड्स किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर आपके सभी पॉइंट्स आपके जाएंगे. ये थोड़ा सा पैराबोला इसलिए बना लिया क्योंकि यहाँ आप देखें तो ये थोड़ा सा तेजी से जाएगा, बिकॉज z2 हैज 2 ऑफ दैट. ओके, तो इस कारण इसको थोड़ा सा हमने इस शेप में दिया है. सेम चीज यहाँ पर भी लागू होती है, बट हियर दिस टर्म, ड्यू टू दिस टर्म, जो लाइन ऑफ सिमेट्री इज हियर this z1, ओके, एक्सिस, हियर क्या होगा आपका y1 इक्वल्स टू y2, और इसका नेचर रफली आप ड्रा करेंगे मैटलैब में, तो इस तरह के आपके पास इसके कर्व आपको मिलेंगे. ठीक है, तो ये यहाँ पे हम सिर्फ आपको ये यहाँ बताना चाह रहे हैं कि
यहाँ पे आपकी जो सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि आपका कैनोनिकल फॉर्म में है तो आपको इस तरह की आपको उसकी फेस पोर्ट्रेट मिलेगी, और जब आपके नॉन कैनोनिकल फॉर्म में है तो आपको यही पैटर्न मिलेगा, और थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। थोड़ा सा इसका आप देखें तो एग्जैक्टली पैटर्न तो सेम है, बट थोड़ी सी इसकी ओरिएंटेशन थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है, और ये आप पे डिपेंड करेगी इस पे कि ये आपका क्या अनुकूल फॉर्म है। तो हम करते हैं सर अगर रूट्स पॉजिटिव होंगे तब ये एरोज बाहर की तरफ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे केसेस पे आएंगे, हम अभी सारे केसेस पे आएंगे। अभी तो हम सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी जो सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने ए और बी के फॉर्म में बनाया, तो दो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गए, एक ये बन गया और एक ये हो गया। ए यहाँ पे क्या है आपका नॉन कैनोनिकल मैट्रिक्स है, बी क्या है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है इतना? तो जो डायगोनल फॉर्म होगा उसका जो फेस प्लेन होगा वो बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख रहा है, ठीक है। बट जो जिस मैट्रिक्स से आपने डायगोनल मैट्रिक्स बनाई है उस मैट्रिक्स का अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा बिल्कुल पैटर्न यही होगा बट थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक है। तो यही हम एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारी मैट्रिक्सेस हैं तो कैनोनिकल फॉर्म में ऐसी आपकी फेस पोर्ट्रेट दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्या दिखेगी, ये सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो इस तरह की चीजें होंगी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसका पैटर्न ऐसा होगा, ओके। और ये सारी चीजें आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको ये आइडिया लेनी है कि हमारा सोल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। एग्जैक्टली शेप क्या होंगे, एग्जैक्टली शेप आप जब इसे ड्रॉ करेंगे मैटलैब में तो आपको मालूम होंगे। रफ स्केचिंग हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। रफ स्केचिंग हम इस तरह से करते हैं, हाँ ये इस तरह से जा रहा है Z1 की ओर, इस तरह से जा रहा है, तो ये रफ स्केचिंग है हमारी। बट एग्जैक्ट इसके जो फेस प्लेन डायग्राम है वो आपको बाय यूजिंग मैटलैब, ओके। वो कैसे होते हैं, उसे कोड क्या होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए, तो ओके, सो ठीक है। तो इसी को अगर हम कन्वर्स पार्ट में ले जाएं कि यहां से इस साइड में ले जाएं, सो इफ इन जनरल it is easy to draw the face portrait of equation first when A is in its canonical form, okay। तो ये आपके लिए इजी होगा जब ये आपके कैनोनिकल फॉर्म में होगी, ठीक है। सो व्हेन A is in canonical form, okay, तो यहाँ पे okay, so when we coming back to equation 1, so coming back to first, and suppose P be an invertible 2x2 matrix, invertible close to matrix such that suppose A equals to this thing where B is a canonical form of A, okay. So here your system is this Z prime equals to BZ, okay, and what is your dy by dx? So dy by dx equals to, this is P dz over dx, so that equals to P, and this is bz, and
Okay, so y prime that equals to this y prime that equals to if you write what is z is, so here p b, and what is z? So z is when we putting y equals to pz. So here this y equals to pz. So this is dy by dx is p dz over dx, and this p, and what is z prime? Z prime is bz. So you write here bz, and pb, and what is z? Z is p inverse y. So this is a p inverse y, and here this equals to pb p inverse or p inverse pb. These are the same, and that equals to ay. Okay, so here you take this back substitution, so you get here y inverse equals to ay. So if we take this matrix z prime that equals to bz, so you get this y prime equals to ay, and here b be the your chemical matrix, and here a be the non-chemical matrix, which is right in this form. So from in previous page you had to given this, and you find that one, and here if this is given, you find y prime equals to ay. Okay, so now by this time it is clear that the phase portrait of this equation one is the phase portrait of this z prime equals to bz is under the transformation. That transformation is y equals to p inverse z. Okay, so that is your transformation. So if we y equals to, if we take a p inverse z, so this becomes p inverse, and that is z. This is p inverse bz. This becomes p inverse b, and then that case z is equals to py. So that becomes this thing, p inverse bpy, that equals to a. So that equals to this thing. Okay, so this means it is clear that the phase portrait of this equation y prime equals to ay, this phase portrait of this is same होगी दोनों की, किसकी the phase portrait of that under the transformation y prime equals to p inverse z. Okay, so in दोनों केस में आपकी चीजें सेम होंगी. Okay, so here the matrix B आपकी किसी फॉर्म में हो सकती है, विच इज डायगोनल फॉर्म में हो या फिर आपकी आर्बिट्रेरी हो. तो इस चीज को हम अब डिस्कस करेंगे, और इसके आइगन वैल्यूज पे डिपेंड करेगी अब हमारी ये सारी एनालिसिस. ओके, सो इन नेक्स्ट पेज या फिर हम यहाँ पे एक लाइन हम लिख भी दें, यहाँ आप रिमार्क में आप लिख भी सकते हो कि by this time it is clear that phase portrait for equation first is the phase portrait of equation third under the transformation that transformation is y that equals to p inverse z. ओके, तो इस दोनों आपकी सेम होगी. तो नेक्स्ट पेज पे हम आए, और नेक्स्ट पेज we also write our matrix B has one of the following form. Okay,
And suppose our matrix B, if suppose lambda and mu, this is your chemical form, which this thing, or your matrix B is suppose these two are same and of this type, or in different case your matrix this is suppose in this form, if matrix B. Okay, and suppose your Z0 be an initial condition for your this system of equation. Okay, okay. So that is initial condition is given. This is a Z at x equals to 0. This equals to Z0. Okay, suppose this is equation number. Suppose this is equation number 3. This is equation number 4. Okay, so then the solution of the initial value problem, and you know that what is the solution? This is Z equals to, this is function of x, this equals to e to the power bx, and this is your initial condition. You know that this is the solution of initial value problem. And for the free, there are, B has 3 different choices. So can write for the 3 different choices of matrix B, we have 3 solutions, that is Zx equals to e to the power for this. सर डिफरेंट के बाद क्या लिखे हैं 3 डिफरेंट 0 e to the power mu x and Z0. This is the first solution Choice. for if B, yes, yes. Yeah, and for the 3 different choices of B, हो गया सर choices CHOICES, choices of B, we have this ZX equals to this thing. Okay, and okay. Okay, so here the first one is ZX, and second if B with the matrix this thing. So what is our solution? So our solution is ZX equals to e to the power lambda x, and in bracket this equals to 1 x, this is 0 1, this Z0. Okay, so you know that in previous class we look at B equals to this thing. So what is the exponential of bx? So you know that this is the exponential of bx. And for third case, what is the solution? So Zx that equals to, for this case we have also calculated the value of exponential bx, and in that case this is e to the power real part, that is ax, and here cos of bx minus sine bx, here sine bx cos bx. Okay, and this is Z0. So these are 3 different solutions if our B be the matrix if in this standard form. Okay, so these are your solution. Okay, so with the above representation of Z, we can draw the phase portrait. Okay, so you can write here with the above representation
of Z, we can draw the phase portrait. Okay, we can draw the phase portrait. Okay, so with the above representation of Z, we can draw the phase portrait. And now we discuss for different cases when this lambda and mu both are positive, when lambda and mu both are negative, or both are equals to 0, or either this is positive and equal or negative equal, or finally these are the complex values. Okay, so for different values we can solve this problem and try to draw the phase plane. Okay, so now we discuss the 4 cases when our lambda and mu greater than 0 and lambda greater than 0 but mu less than 0, or lambda and mu both are equal with positive or negative, and finally for last case when this lambda is a complex number. Okay. So basically here we will discuss for 4 different cases. Okay, so here there are 4 different cases, and so case 1 when these 2 are negative, either equal or different. Okay, so in next page, हेलो सर हाँ सर जो इस साइड के पहले वाली स्लाइड में जो लास्ट में आपने रिमार्क टाइप का लिखा हुआ था वो एक बार फिर से बता दीजिए। किस इसमें ऐसे भी पहले इससे पहले वाले में जो लास्ट में लिखा हुआ था, लास्ट में हमने वही लिखा था कि this time it is basically it is clear that the phase portrait of equation 1 is the phase portrait of equation that is जो भी equation हमने दिया था z prime 3 थी। okay, under the transformation, and that transformation is y equals to p inverse z. okay, तो ये चीज लिखी थी उसमें। ओके सर, तो ठीक है, तो नेक्स्ट पेज सर हाँ सर वो उसी जगह पे रिमार्क में ही y प्राइम इज इक्वल टू ए वाई तो समझ में आया, लेकिन सर जो आपने बताया कि सेम इज y इज इक्वल टू p इनवर्स z, वो y इज इक्वल टू p इनवर्स z कैसे हुआ, वो कैसे आया? y इक्वल्स टू p इनवर्स z ट्रांसफॉर्मेशन लिया ना हमने, वहां पे हमने ये लिया, हमने जो लिया y इक्वल्स टू p इनवर्स z, हमने ट्रांसफॉर्मेशन ही ले रहे हैं हम। Okay, so if this transformation, then we have find dy over dx, then this equals to p inverse dz over dx. Okay, and here our equation number 3 is z prime equals to b of z. Okay, then here we putting simply b p inverse b z. Okay, because of this z prime equals to bz. Okay, and now this, what is this value is b and this is z. So what is the value of z here? So here z equals to, if you multiply by p matrix to both sides, this py that equals to z. So here we putting here what is z is. So in next line this is फॉर्म में जब आप उसे ले रहे थे तो this equals to p inverse bp. This is your matrix A and this is the canonical form of matrix B. So here if you putting p inverse AB, that equals to AY. So here this y prime that equals to AY. So y prime equals to AY, and here our
मेन दिस z प्राइम इक्वल्स टू bz। तो ये हमारा इसके फॉर्म में हमारा सेम कब होगा फेस पोर्ट्रेट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन इफ यू टेक y इक्वल्स टू p इनवर्स z। आपने यही चीज लिया तो आपकी ये चीज सेम आ रही ओके सर, समझ में आ गया। हाँ ठीक 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 ओके ओके। तो ये पार्ट तो यहाँ नहीं, तो प्रीवियस पेज का है, तो आप मैं इसे हटा देता हूँ। Okay, so now next page, if we discuss our 4 different cases. Okay, तो हम जरूरी नहीं कि हम यही चीज लें, हम इन दोनों को क्लब भी कर लें। जैसे कि सपोज हमने लैम्डा और म्यू को क्या करें, हम लेस देन 0 ले लिया दोनों को, यहाँ पे ये दोनों ग्रेटर देन 0 हो या दोनों के दोनों लेस देन 0 हो, या आप ये भी लिख सकते थे कि लैम्डा हमारा जो है दैट लैम्डा इज either lambda is less than 0, म्यू भी हमारा क्या हो लेस देन 0। तो एक केस ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों हमारे एक होगा दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक हो सकते हैं दोनों इक्वल हो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो हम इन्हीं सारी पॉसिबिलिटी को हम इस तरह से कर सकते हैं कि इफ बोथ आर नेगेटिव और इक्वल, ओके एंड बोथ आर पॉजिटिव और इक्वल, उस केसेस को हम लेके चलें और यहाँ पे हम इसको ले लें कि ये हमारे डिफरेंट है, पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो हम इन केसेस को थोड़ा डिफाइन कर लें इस फॉर्म में कि बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर नेगेटिव एंड इक्वल। तो हमारा ये एक केस हो जाएगा, दोनों हमारे पॉजिटिव हो या फिर हमारे डिफरेंट हो या फिर वो क्या हो आपस में इक्वल हो। तो इन दोनों को मिला करके हम 2 डिफरेंट केसेस हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज, so case first, which is let so this is either different or equal but both are negative। okay, तो हम इस तरह की केस हमने ले लिया with our matrix B and that matrix is of type test। okay, or for same, so this is R type test। ओके, सो अगर ये हमारे पास केसेस हैं, ओके, सो इन दिस केस the phase portrait of your equation 3, this look like this is a graph of this form is basically okay, so here there are some basically 3 cases, and case 1 when this both are equal, case 2 when this is lambda and mu दोनों हमारे छोटे हों और of course this is less than 0, and second one if this mu or lambda is greater than mu, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि or this thing। okay, so there are 3 choices basically, दोनों नेगेटिव हो इक्वल हो, ये हमारे नेगेटिव है दोनों बट इसमें ये छोटा ये बड़ा है, ये भी दोनों नेगेटिव है बट ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे जो ग्राफ होंगे बेसिकली ग्राफ जो तीनों केसेस के जो ग्राफ होंगे, एंड दिस इज Z1, Z2 and this with the origin, this is Z1, Z2 present, this is Z1, Z2, this is origin। okay, so here अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, जब दोनों इक्वल हैं, तो here we have to calculate what is the value of limit, this is the independent variable is x, when x is very large, then what about Z2x by Z1x,
and this is basically your theta. This is your basically theta. Okay, so z2x over this is a y by x. Okay, this is z2x over this thing. So here, if both are equal, then here the solution is basically something constant c1 e to the power minus of something. Okay, तो suppose एक केस हमने ले लिया कि जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है तो सपोज मान लिया कि हमारी दोनों इक्वल और लेस देन है, इस केस में हमारा लैम्डा -3 हो और म्यू भी हमारा -3 है, जिसमें दोनों नेगेटिव है और इक्वल है. तो हियर द सॉल्यूशन इज फॉर दिस म्यू, तो दिस इज बिकम्स माइनस ऑफ दिस इज बेसिकली दिस इक्वल्स टू -3. दिस इज mu x and here c2 e to the power lambda x. So for that here if we c1 by c2, because these two are same, so this becomes a constant one. So this is a constant. So in this case here there the graph of this curve is like this when these two are equal. So in this case c2 to the power minus lambda नहीं होगा वो. तो डिनोमिनेटर में वो c2 e to the power minus lambda x नहीं होगा. e to the power minus lambda x minus नहीं अभी आपने सोल्यूशन लिखा ना, वहां पे आपने zx सोल्यूशन क्या लिखा? zx सोल्यूशन इज e to the power lambda x 0 0 lambda x. ओके, तो इफ लैम्डा एंड म्यू आर यू दिस थिंग. ओके, यहाँ पे हमें मालूम नहीं ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो आवर सॉल्यूशन इज e to the power mu2x e to the power lambda x. ओके, बट हियर म्यू इज -3, lambda is -3. व्हेन वी पुटिंग हियर तो e to the power both are same, so this is -3x and here e to the power -3x. Okay, so they will cancel out. They are simply c1 by c2 because in this case mu and lambda are same. Okay, clear? ओके सर. ठीक है. यस सर. सर इनकी डाउट थी कि e टू द पावर ऊपर -μx लिखा है और नीचे तो लैम्डा में दिस केस यहाँ पे जो आपके जो सॉल्यूशन होंगे that is this in this case the phase portrait is look like this thing, because when here when this is solution, when z1 equals to c2 something constant e to the power lambda x, and when lambda is -3x, this means this becomes 2. When x is very large, when x tends to infinity, this tends to 0. So in this sense, when these two are same, then the phase portrait of this look like this thing. Okay, तो इस तरह का phase portrait आपका होगा. Clear? And when अगर आप इस केस में आए जहाँ पे आपके लैम्डा और म्यू ये दोनों जो है वो आपके लेस देन है और दोनों ही, बट म्यू इज ग्रेटर देन. ओके, तो अगर म्यू आपका बड़ा है तो इस केस में लिमिट x tends to infinity, what about z2x over z1x? So this equals to limit x tends to infinity. Okay, and suppose here हम दोनों को नेगेटिव ले रहे हैं, एक को हमने ले लिया सपोज लैम्डा को हमने -2 ले लिया और म्यू को हमने बड़ा ले लिया -1 ले लिया. ठीक है, तो इस केस में समझने के लिए हमने सपोज -2 ले लिया, इसको -1 ले लिया. तो व्हाट इज z2 इज समथिंग कांस्टेंट e to the power, this is mu x and here c1 e to the power lambda x. So this equals to limit x tends to infinity, and this is when this is -x something constant e to the power, this is -x and here c1 e to the power -2x. Okay, so when x tends to infinity, so if you're solving this is e to the power x, and x tends to infinity, this equals to infinity. Okay, so here the angle is the phase portrait of this is when x is very large. Okay, so the nature is when x is very large, then this goes both solution because these two are -1, so this solution z2 and z1 converts to this point 0.
आप ये देखें कि Z2 और Z1 तो ये हमारे है ही हैं। यहाँ पे जो सोल्यूशन है, x की वैल्यू जब हम लार्ज कर दें और लैम्डा की वैल्यू -2 रखें या म्यू की वैल्यू -1 रखें, जब x इज टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उस केस में हमारा ये कहाँ पे जाएगा, ये टुवर्ड्स हमारा 0 की ओर हमारा ये जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टुवर्ड्स 0 की ओर ये जाएगा, और उस केस में हमारा फेस प्लेन जो एनालिसिस होगी वो हमारी कुछ इस फॉर्म की होगी कि here z1 is lambda is smaller than, so here in this case when lambda is greater than, तो mu हमारा दोनों के दोनों ही हमारे टुवर्ड्स क्या होंगे, ओरिजिन होंगे। ओके, बट हियर दिस लैम्डा जो है ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, म्यू जो है, म्यू बेसिकली क्या है हमारा, ग्रेटर देन है, तो इसलिए म्यू फॉर दिस लैम्डा 2, तो इसलिए इस केस में जो सोल्यूशन होंगे ग्राफ हमारे कुछ इस तरह के होंगे। Okay, and here in last case, this limit x tends to infinity, z2x, z1x, here this equals to limit x tends to infinity, c2 mu x, c1 lambda x, and here lambda is greater than, so हम lambda को हम -2 ले लें, म्यू को हमने -1 ले लिया। ओके, तो हियर द सॉल्यूशन इज, ऐसा सॉल्यूशन है कि एक्सपोनेंशियल माइनस में, सो दिस मींस z2 भी हमारा व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो z2 भी हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा और लैम्डा 1 भी होगा। बट बाकी इस प्लेन में क्या होंगे, दिस इज बिकॉज दिस लैम्डा म्यू 1 is greater than, so that's why this curve is like this. Okay, this touches the origin, this is origin. Okay, so here in this sense the graph of your face portrait looks like this thing. Okay, तो इस तरह का कुछ आपका बिहेवियर होगा। तो ये आपके डिफरेंट केसेस हैं, तो इन केसेस में आपके इस तरह से आप सॉल्यूशंस के निकाल लें। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन इज व्हाट इज योर z1 इज समथिंग कांस्टेंट e to the power, this is lambda x. Okay, and here if lambda is less than 0, if lambda is less than 0, इस केस में z1 tends to 0, जबकि x tends to क्या होगा हमारा, इंफिनिटी। ओके, जब x हमारा इंफिनिटी हो जाए और लैम्डा हमारा फिक्स है, z1 हमारा यहाँ होगा। सिमिलरली फॉर z2, सिमिलरली यही चीज आपके लिए Z2 के लिए भी यही सेम कंडीशन होगी कि हमारा जो Z2 है दैट इक्वल्स टू C2 which we call mu x, and this mu is less than 0, तो Z2 भी tends to 0 होगा when x tends to infinity. Okay, when this is suppose ये हमारा अगर पॉजिटिव हो तो लैम्डा 1 मेरा क्या हो, tends to this is Z1 tends to infinity और x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उस केस में ये जो एरो इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन ना होकर के क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों साइड में। ओके, और एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे और इसका क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो इसकी एनालिसिस क्या होगी, जो भी पॉइंट इधर आएगा वो इस साइड तो आएगा बट ओरिजिन की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि z1 क्या है, आउटसाइड डायरेक्शन में, तो ये ऐसे जाकर के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे इसके बिहेवियर को देखते हुए। तो ये तो हम एक रफ डायग्राम हम बताते जा रहे हैं कि कैसे इसका नेचर इन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा व्हेन बोथ आर नेगेटिव 1। ओके, अगर दोनों हमारे नेगेटिव हो तो बस मेन चीज है कि सभी जो इनके डायरेक्शन डेरिवेटिव्स हैं सभी आपके टुवर्ड्स ओरिजिन होंगे इस केस में। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन होगी व्हेन दोनों सेम होंगे तो डायरेक्टली अप्रोच करेंगे सीधे स्ट्रेट लाइन के थ्रू। हाँ, अगर ये कर्व लाइंस हो जाएंगी, ये एग्जैक्टली पैराबोला
भी हो सकती है और कुछ और भी शेप में हो सकती है। ओके, तो मतलब कि एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर का कर्व हो, एक्स क्यूब, डिपेंड ऑन कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ओके, हाँ, लेकिन ये कर्व लाइंस होंगी, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो थोड़ी सी कर्व होगी। हाँ, किस साइड में ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उस साइड से ये ज्यादा कर्व होगी, और जिधर वैल्यू कम है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये कर्व इस साइड से भी हो सकती है, इस साइड से भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसमें सर ये तो केस 1 में हमने लैम्डा लेस देन इक्वल टू म्यू लिया हुआ है, और लेकिन हमने थर्ड फेस पोर्ट्रेट में म्यू इज लेस देन लैम्डा ले लिया है। फर्स्ट केस में लैम्डा लेस देन इक्वल टू म्यू केस 1 में। हाँ हाँ, दोनों नेगेटिव है और इक्वल है, दोनों इक्वल है। हाँ, लेकिन सर थर्ड फेस -2 है, थर्ड फेस पोर्ट्रेट में म्यू इज लेस देन लैम्डा लिया है। हाँ, तो ये लिखा तो है, यही तो केस है हमारे, केसेस में ये लिखा है लेस देन होगा ना 1 से। ये दोनों देखिए हमारे नेगेटिव है और इक्वल है। हाँ, ये दोनों हमारे नेगेटिव हैं बट अनइक्वल है, लेकिन इसमें म्यू बड़ा है, लैम्डा छोटा है। यहाँ पर दोनों हमारे नेगेटिव है, अनइक्वल है, बट ये हमारे जो है लैम्डा बड़ा है, म्यू बड़ा है। अभी हम केस फर्स्ट ही चल रहे हैं, अभी हमारा केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट के 3 सब सेक्शन है, केस फर्स्ट के ही 3 सेक्शंस अलग अलग हैं। हमारे पास 4 केसेस हैं, वो 4 डिफरेंट केसेस। अभी तो मैं केस 1 में ही हूँ। अभी तो सर लैम्डा -2 है और सर म्यू की वैल्यू -1 है, तो सब बड़ी कैसे हुआ? हाँ सर वही तो। अरे उल्टा लिख दिया, यही सेम चीज लिख दिया, यही आप कर रहे हो ना। ओके ओके, समझिए। लिखने में मिस्टेक है थोड़ी सी, समझिए। ओके, लिया हमने सही है, लिखा गड़बड़। ठीक। लैम्डा आपका -1 है। ओके, अब बताइएगा आप ठीक है कि नहीं। लैम्डा हमने ले लिया -1 और म्यू ले लिया -2। अब ठीक है, अब ये चीज होगी। ओके, और यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू है, अच्छा इसको सॉल्व भी तो नहीं किया हमने। दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज c2 e टू द पावर -2x and here c1 e to the power -x. So when x tends to infinity, this equals to 0. This equals to 0. Okay, so that's why here angle is 0 and here angle is your infinity π/2. So that's why the difference of here आप यहाँ पे देखोगे तो ये एंगल आपका बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो परपेंडिकुलर आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इसको थोड़ा इसके आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एंड हेंस दिस एन एरो is indicated to note that this z1 tends to 0 and z2 tends to 0 as x tends to infinity. Okay, तो बेसिकली इसका जिस्ट यही है कि